Hello everyone, good morning. How are you? So today we are going to talk about our next topic, that is General Organic Chemistry, GOC. So in this chapter, we are going to come across several concepts, okay? And they are very, very important in order to understand the organic chemistry thoroughly, right? So please tell me that I'm audible and my screen is visible to you. Okay? I'm audible and my screen is visible to you, right? Okay, so now let's begin with our today's session. Yeah, I'm audible and I'm visible. Very good. Thank you so much for responding. Okay, so let's start with today's session. Okay, General Organic Chemistry. In this, very, very important. Yeah. Okay. Right. So the very, very important is what when we talk about organic chemistry, we come across a very simple atom, okay, which is the due to which the organic chemistry is present, and that atom is what? Carbon. So what is the basic and very important property of carbon? It has a tetravalency. It has a tetravalency. Okay, the tetravalency of carbon we can explain with the basis of the excited state concept here. This is the ground state of carbon atom. Okay, this is a ground state of carbon atom 1s2, 2s2, 2p2, right? But when it absorbs the energy, it turns into what? There are 4 orbitals which are what? Available for the bonding. Okay, so this is the modern concept of bonding in which a C-H bond can be formed between a given compounds, that is between a given atoms like carbon and hydrogen in a molecule CH4. Okay, so this concept is based on what? Hybridization concept. Okay, so carbon is having a unique property that it can form sigma and pi bonds. Okay, that is a unique property of carbon. Next, so what is the meaning of catenation? So carbon is the atom which has a very, very unique property to form bonds with other atoms. And such a property of forming the bonds with the other carbon atom, okay, is known as a catenation. This is very, very important property which is shown by catenation, and that's why carbon can form different types of compounds. Okay. Next, hybridization. What is the hybridization? Hybridization is intermixing of orbitals of almost similar energy to form the same number of orbitals of exactly similar energy. What is the meaning of this? So if suppose you know here 1s, 2s and 2p. Out of these orbitals, there are outer shell orbital which are this 2s orbitals electron as well as 2p orbital electrons. So these 1s orbital electrons will be fixed deposit. They will not participate into the bonding. But these outermost shell electronic configuration or outermost shell electrons which are present in the 2s and 2p orbital, they are easily available for the formation of bonding. Okay, so what happens here is, you know that 2s energy and 2p energy is what? Different. So if any atom wants to bind with the carbon atom, there should be the orbitals available which will have the same energy. So how we can make the same energy? So we are mixing the orbitals. What we are doing here, we are intermixing the orbitals, 2s orbital, 2p orbital for carbon atom. Okay, we can do this for different atoms also, but right now I am only talking about carbon. So here we can take 2s orbital and we can take 2p orbital. We mix them together. First of all, they were what? Of different energy. When you mix them together and you make a mixing and recasting of them to form the new set of orbitals which are having similar energy, which are having the similar energy. So that is what known as what? That is the definition of our hybridization concept. That is the definition of hybridization concept. That is intermixing of orbitals of almost similar energy, 2s and 2p, to form the same number of orbitals. If you are mixing 1 2s and 3p, then how many are these? 4 orbitals. Like total are what? 4 orbitals.
So how many are going to form? If you are mixing 4 orbitals together, you are going to get 4 orbitals only. Okay, 10 orbitals nahi milenge. So from mixing the orbitals of almost similar energy to form the same number of orbitals, but now these same number of orbitals will have similar energy. Okay, all will have similar energy. दोनों चारों की जो hybridized orbital होगी उनकी energy क्या होगी? Same होगी, and that's why we are intermixing them. So now you know that carbon shows 3 types of hybridization: sp, sp2 and sp3. You know this depending upon the number of sigma bonds formed in the given compound. If there are 4 sigma bonds, the hybridization is sp3. If there are 3 sigma bonds, the hybridization is sp2 and the shape is trigonal planar. If only 2 sigma bonds are present, hybridization is sp and it is a linear in shape. Okay. Usually the saturated hydrocarbons consist of sp3 hybridization, while unsaturated consist of sp2 or sp hybridization. You know this. Okay, I'm just revising you this. Okay, so sp3, sp2, sp, yeah, 1 sigma and 2 pi bond in sp, right? Sigma, sigma, pi by, this is alene system. Okay, this is a cation, this is what our neutral molecule, and this is what our anion, right? Next, so the questions are asked depending upon the number of sigma and pi bonds. Okay, so this is certain PYQs I have collected in order to understand the tetravalency of carbon, as well as which type of questions, how the questions are framed depending upon this topic. So you can see here the first question: the number of sigma and pi bonds in pent 2-in 4-Y-in is. So first of all, we need to be able to draw the structure of this molecule. Right? So what is the structure of this molecule? Yeah, can you tell me the structure of this molecule? How many carbons are there? Pent means 5 carbons are there. So 1, 2, 3, 4 and 5 carbons. Okay, and 5 carbons are there. Okay, so try to draw the structure of this. Pent 2-in 4-Y-in. So 2 and 3 में double bond है, और 4 और 5 में triple bond है. Okay, 1, 2, 3, 4-Y-in. So 1, 2, 3, 4 and this is 5, right? So now here 5 bonds, 4 triple bond, that's why 1H. Okay, यहाँ पे क्या आएगा अभी? यहाँ पे आएगा CH3, right? यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H. No, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. इन्होंने 4 हो गए ऑलरेडी. ठीक है? So कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, बोलिए मुझे. या हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स? CH के भी सिग्मा बॉन्ड्स है. यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स होते हैं? मैंने आप लोगों को कहा अभी. या यहाँ पे है 1 सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1. ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड. तो कितने हो गए? यस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी? यस, एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? Yeah, answers. Can you tell me how many sigma and pi bonds are present here in this molecule? Hello. Hello. Yes, can you tell me how many sigma and pi bonds are present? So see here, how many? 10 sigma bonds and 3 pi bonds are present. How you can say 3 pi bonds are present? Very easy. See here, this is 1 pi bond present here in double bond, and in another triple bond 2 pi bonds are present. Here 1 pi bond, 1 sigma bond. Here 2 pi bonds and 1 sigma bond. Right? Here 1 sigma bond. ठीक है, यहाँ पे 1 sigma bond. Then यहाँ पे 1 sigma bond. यहाँ पे 1 sigma bond. यहाँ पे 1 sigma bond. यहाँ पे कितने? 3 sigma bond. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 sigma bonds. And how many pi bonds? 1 and 2 pi bonds. So 1 plus 2, 3 total pi bonds are present. Very simple answer. Option B, 10 sigma bonds and 3 pi bonds. Any doubts in this? Any doubts in this? Can you determine sigma and pi bonds present? Okay, right. Next, which of the following molecule represent the order of hybridization? sp2, then sp2, then sp, sp from left to right. So from left to right, we need to find out a molecule among these which is showing sp2, sp2, then sp, sp hybridization. So here you can see this molecule CH, triple bond,
ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सिंगल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, सी एच टू, सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ओके, यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ओके। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा सिंपल है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें से कौन दिखा रहा है हमको, ऑप्शन बी में देखो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सिंगल बॉन्ड सी एच, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, देन sp एंड sp. Any doubt in this? Can you solve such type of problems? If you have any doubt, you can tell me, okay? At any time. Yeah. Total number of pi bond electrons in the following structure is. So here we need to find out how many number of pi bond electrons are present, okay, in this given molecule. So first of all, try to determine how many number of pi bonds are present here. So here, how many number of pi bonds means how many number of double bonds are present here. So how many double bonds are present? 1, 2, 3, and this is 4. So total number of double bonds are what? 4. Right? So here there are 4 double bonds. Hence number of pi electrons will be what? Pi electrons kitne honge? 4 into 2. That is total number of pi electrons will be how much? 8. Right? Any doubt in this? In order to occur any bond, right? How many electrons are present there? Right? So here 4 bonds are present, 4 pi bonds are present. That's the total number of pi electrons will be double of that, that is 8. Yes, any doubt in this? Shall I move on? Yeah, next topic among this chapter. Yes, IUPAC. Okay, IUPAC nomenclature is very, very important because one question is almost in every exam is asked about IUPAC nomenclature. So first of all, whenever you want to name any organic compound, you need to consider a longest carbon chain of a molecule. Okay, you have to identify the longest carbon chain and you need to see which chain is the longest one. Then start the numbering from terminal carbon from where branching will be nearest. From where branching will be nearest, from that point of end, you need to start numbering. Okay. If the two substituents are found in equivalent positions, then numbering should be done alphabetically. If suppose here is one molecule, that is CH3, which is a branching present, okay, one substituent present, and here is another substituent like this way. Okay, so from here also it is at second position and from here also it is at second position. But which is coming alphabetically, this is what? Methyl. Its name is methyl. Its name is what? Chloro. So what is coming first in alphabetically order? Chloro is coming first. That's why we will start the numbering from this side. Okay, not from this side. Clear? Very good. There are two chains of equal size, then that chain is to be selected which contain more number of side chain. If on the parent chain, if there are two chains present, but chain which is having more number of side chains will be considered first. So if suppose we have a molecule like this way, 1, 2, 3, 4. Okay, and if this is a one branch, okay, and if suppose we have another branch like this way. Okay, so here more branching is present and here less branching is present, right? So that's why we will consider the naming from this side. Yeah, the longest chain of carbon atoms containing functional group is numbered in such a way that the functional group attached to carbon atom possessing lowest possible number in the chain. Suppose here CHO is present, ठीक है, यहाँ पे क्या present है? CHO. तो आप इधर से ही नेमिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से नेमिंग नहीं करेंगे. कि अगर CHO यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप इसको लोवेस्ट नंबरिंग देना है. आपको पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबरिंग देना है. If polyfunctional compounds are present, one of the functional group chosen as a priority as a functional group as the compound is named on that basis. So पहले आपको चूज करना है कि प्रायोरिटी वाइज चूज करना है. प्रायोरिटी क्या होगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कौन सा पहले लेना है. अगर टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है, किसको प्रायोरिटी देना है. Okay, in that way we need to choose the priority for a given functional group and then only we need to start giving the number. We need to consider the longest chain, we need to consider the substituents, alphabetical order. Okay, very good. Now if suppose these functional groups are present, which type of prefixes we are going to use for them? So for nitro we use alkoxy, for OR chloro, then bromo, then ido, then fluoro and nitroso. Okay,
and their name you can see here: nitroalkane, chloroalkane, alkoxyalkane, bromoalkane, iodoalkane, fluoroalkane, and nitrosoalkane. Right? Next, if we have the family of different functional groups, then which suffix we are going to apply for them? If alcohol is our in our parent chain and we need to see that the compound is alcohol, then how we are going to name them with the respect to IUPAC? We will end the name of the given compound with dash OL. Okay, not dash. Here will be the name and then OL, like alkanol. Okay, alkane का जो हम AN ही है, that we are going to replace by OL. Right? Next, amine. Okay, al for aldehyde, 1 for ketone, oic acid for carboxylic acid, amide के लिए amide, acyl halide के लिए oil halide, and esters के लिए OH, and nitriles के लिए nitrite. Okay, and what is the priority order for the functional groups? So first of all, acid, then sulfuric acid, then what? COO, then amide, then cyanide, then CHO, then ketone, aldehyde, then ketone, then alcohol, then amine, then double bond, and then triple bond. So if suppose in our molecule there are two functional group present, one is a ketone and another one is an acid, so to which you are going to give the priority, and with the help of which you are going to give the numbering. So you need to use this priority wise sequence. Okay, you need to use this priority sequence. So first of all, COH आएगा, तो इधर से numbering दे दो 1, 2, 3, 4 and 5. Are you getting this? Any doubts in this? Okay, you need to give the parent chain name ending with oic acid. How you are going to do that? So let's solve certain problems on this given concept. Okay, next, the IUPAC name of a given compound given below is. Yeah, so here see, you can see this question is asked in the NEET exam, right? So recent question I have taken. So now tell me what will be the answer. IUPAC name for a given compound. Yeah, A, B, C, D. Yes, tell me. दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक है अल्डिहाइडिक ग्रुप और एक है कीटो ग्रुप, और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. प्रायोरिटी क्या है हमारी? CHO के लिए पहले, देन CO के लिए, देन डबल बॉन्ड के लिए. Okay, Sushant, you are saying 1 will be the answer. Yeah, C. What will be the answer? Let's talk about that. Okay, so priority wise कौन सा पहले आएगा हमारा? एसिड को पहले आएगा. सॉरी, नॉट एसिड, हमारा क्या है ये? अल्डिहाइड. ठीक है, अल्डिहाइड को हमको प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करना है? We need to give it the parent name. Okay, parent name will be end with the CHO name. Okay, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इन्होंने कीटोन यूज किया है पेरेंट चेन के लिए, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे अल है, ठीक है, इनल, यहाँ पे भी इनल है, यहाँ पे भी इनल. सो सब में क्या हो रहा है? अल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ पेरेंट नेम चेन. ओके, पेरेंट चेन नेम. नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गिव द numbering. Okay, from where we are going to give the numbering. So here we need to start giving number from this side. Okay, जहाँ पे CHO present है उधर से हम लोग नंबर देंगे. तो मैं दूंगी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, then 5 and then 6. Is that clear? So what is the parent name? हेक्सेन का हेक्सेनल होगा. हेक्सेन था, ठीक है, उसका क्या होगा? हेक्सेन अल. ठीक है, एल से हम लोग रिप्लेस करेंगे. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा पेरेंट चेन है, अल तो हो गया. अब 3 पे क्या है? कीटो ग्रुप है, 2 पे क्या है? मिथिल ग्रुप है, और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है. तो ये हेक्सेन अल नहीं हो सकता क्योंकि ये हेक्सिन चेन है, तो ये हेक्सिनल होगा. ठीक है, तो हेक्सिनल करने के साथ साथ किस पोजिशन पे डबल बॉन्ड? 4th पोजिशन पे. ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी लाइक दिस वे. ओके, हेक्स 4 इनल. अब उसके आगे क्या है? 3rd ग्रुप में क्या है? कीटो प्रेजेंट है. 2nd में क्या प्रेजेंट है? मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है. मिथिल पहले आएगा या कीटो पहले आएगा? आपको पता है, मैंने आपको बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो. कौन सा पहले आएगा? एम या के पहले आएगा. सो यू नीड टू राइट कीटो फर्स्ट. सो कीटो का नंबर क्या है? लेकिन 3rd, 3 नंबर है. तो यहाँ पे लिखो 3 कीटो. देन व्हाट इज देयर? 2 मिथिल. The numbering has been done. Everything has been done. Is that clear? So what will be the answer? Option B.
Any doubts in this? Yeah. Hello. Any doubts in this? Okay. No doubts. Very good. So this will be the name of our given compound. So that's why we need to remember the priority वाइज सीक्वेंस. ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 4 5 6. ओके, और इस तरह से नेमिंग करने के बाद हमारा मॉलिक्यूल का नाम आ जाएगा 3 कीटो 2 मिथिल हेक्स 4 इनल. That is option B. Very good. Next, the structure of isobutyl group in the organic compound is. So here, structure of isobutyl group. What is the structure of isobutyl group here? What do you think? Isobutyl group. What is the meaning of isobutyl? Yes, very simple problem. This was very simple problem. Structure of isobutyl compound. Iso, I am talking about iso. Sushant, you are saying that option B will be correct. But see here, I am going to explain this. Okay, so this is a complete straight chain. So it is known as N. Okay, N-butyl group. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को इसको हम बोलते हैं नियो. ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्शरी. ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज आइसोब्यूटिल ग्रुप. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन को 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच थे. ठीक है, और ये हमारी चेन हो रही है. यहाँ पे कार्बन को 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच थे और ये हमारी कार्बन चेन है. यहाँ पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट और देन कार्बन चेन. यहाँ पे क्या है, CH3 CH CH2 CH3. Okay, so this is also not going to be the isobutyl group. So here answer is what? Option C. Any doubts in this, Sushant? You understand this? Isobutyl group is this one. Okay, अगर हमको टर्शरी बोलते कि नियो बोलते तो हम लोग ये आंसर करते हैं. अगर हमको N बोलते तो हम लोग ये आंसर करते हैं. Right? Okay, very good. Next problem. Structure of the compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-in-5 ionic acid is. Yeah. So here, what we need to see is हमको IUPAC name दिया हुआ है and we need to find out which will be the structure. Yeah. Can you tell me which will be the structure? Very simple है. Structure of compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-in-5 ionic acid. So in है मतलब डबल बॉन्ड भी है, ionic है मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी है. ठीक है, मिथिल ग्रुप 4th साइड पे है, OH भी है हमारे पास, COOH भी है और इथिल ग्रुप भी है. ठीक है, तो लेट्स डू द ट्रायल एंड एरर मेथड एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्ट्रक्चर. ओके, सो ये देखो बी मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया, ये 2 नंबर हो गया. ठीक है, 2 नंबर में क्या आ रहा है, मिथिल आ रहा है. सो दैट इज नॉट गुड. यहाँ पे देते हैं 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मिथिल भी नहीं है और इथिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे देखो 1 नंबर एंड 2 नंबर, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए है. वेरी गुड. नेक्स्ट 3 नंबर पे क्या चाहिए हमको, इथिल. ओके, 3 नंबर पे हमको चाहिए इथिल, लेकिन यहाँ पे इथिल है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. नेक्स्ट सी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज ऑप्शन डी. See here what is happening, 1 2 3 4 5 and 6. तो यार 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे इथिल ग्रुप है. देन क्या बोला है, 4 मिथिल हेक्सेन, 4 पे मिथिल है, हेक्स 3 1 2 3 पे क्या है, इन है और 5 पे क्या है, वाइन है. सो 3 इथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल हेक्स 3 इन 5 पे वाइन ओइक एसिड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. Any doubt in this? You should be able to find out the name also and you should be able to find out the structure from the name. Okay, here you can see ethyl comes first in alphabetical order. Yeah, that's why it has written first, even though it is having number more. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी का नंबर छोटा है लेकिन ई पहले आता है इसलिए इथिल पहले लिया, बाद में हाइड्रोक्सी लिखा, बाद में मिथिल लिखा. सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में प्लेस किए. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमेरिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, okay, in the question paper. So isomerism, there are 2 types of isomerism, structural isomerism and stereoisomerism.
So when we talk about structural isomerism, they are of total what? 5 types. So chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism. Okay, so these are what our structural isomerism. So first of all, what is chain isomerism? So chain isomerism means what? When 2 or more compounds have similar molecular formula, but they have different carbon skeletal, then those compounds are known as what? Chain isomer. So here you can see N-pentane, isopentane and neopentane. राइट सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? सेम है, 5 है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? रिंग का स्केलेटन अलग है, एंड दैट्स व्हाई देयर चेन आर डिफरेंट बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 12. दैट्स व्हाई दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एनी डाउट्स इन दिस? Okay, so these are what? Chain isomer. Yeah, very good. Nice. Next, position isomers. What are the position isomers? See, when 2 or more compounds have same molecular formula, but their position of functional group or substituents, then they have different positions of their functional group or substituents, then such isomers are known as position isomers. So see here, C3H8O. So this is present in terms of alcohol also, and this is again present in terms of alcohol also. But here the position of alcohol was at the first carbon attached, and here position of alcohol was at the second carbon. OH has been attached. So that's why these two are isomers. But which type of isomer? Position isomers of each other. Right? Next, functional group isomerism. What is functional group isomerism? So functional group isomerism means what? When there are 2 or more compounds which have same molecular formula but different functional group. Okay, they have same molecular formula but they have different functional group, then these are known as functional isomers, and phenomena is known as functional isomerism. So see here, the molecular formula is C3H6O. We can represent it by using aldehyde as well as ketone. So aldehyde and ketone are what? Functional isomers of each other. Okay, functional group isomerism. Very good. Next, metamers. Yeah. Next, in a functional group isomerism, we can see that tautomerism is a special type of functional group isomerism. Okay, so tautomerism जो होता है हमारे molecule में, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, tautomerism is a special type of functional isomerism which arises in a carbonyl compound containing alpha hydrogen. What is the meaning of this? So you can see here keto form that I have converted into enol form. कैसे convert किया? यहाँ से एक हाइड्रोजन था, उसने ये यहाँ पे बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन लूज किए और इस तरह से वो यहाँ पे चला गया, इस तरह से इनॉल फॉर्म हुआ. क्यों? क्योंकि उसको क्या था? अल्फा हाइड्रोजन. सो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड which contains alpha hydrogen, they can form ketoenol form. They can form ketoenol form. Here also such type of transition can take place and there is a formation of enol form. So this is again the functional group isomerism. So keto का conversion enol में हो रहा है. ठीक है? So this is known as tautomerism. Also, it is one type of functional isomer. So these two are functional isomers of each other, enol and keto. Right? Next is what? Metamerism. So what is metamerism? It arises due to different alkyl groups on other side of the same functional group. So that's why they are known as what? They are known as metamers. Okay, they are known as metamers. Same functional group होगा. Mostly ये हम लोग कार्बोनिल के लिए भी लिख सकते हैं. यहाँ पे C3H7 है और यहाँ पे CH3 है. ये हो गया. और दूसरा हम कह सकते हैं C2H5 है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे है हमारे पास C4H10. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में अलग अलग प्रकार के क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. दैट्स व्हाई दीस टू आर व्हाट? मेटामर्स ऑफ ईच अदर. राइट? एनी डाउट्स इन दिस? Next, geometrical isomers are having same molecular formula but they have different special arrangement of atoms like cis and trans. You know these. So cis में क्या होता है? वो दोनों constituents same side में होते हैं of double bond. That's why they are known as cis. When the same constituents or same substituents are present at the opposite side of a given double bond, it is known as what? Trans isomer. And these two are what? Geometrical isomers of each other. Very good. Next, optical isomerism. These are the compounds. They are having the same physical and chemical properties. But what is the difference present here? They differ only in the behavior towards plane polarized light. So if plane polarized light is passed through such substances, they what happens? They are known as what? Optical isomers. Okay. So when plane polarized light is passed through these substances, the property is known as what? Optical isomerism. And these two are what? Non-superimposable mirror images of each other. We cannot superimpose them on each other like our two hands. If we see them, if we want to superimpose
one hand on another hand, you can see they are not same. Okay, we cannot superimpose them on each other. ये उंगली इस पे आ रही है. Okay, we cannot superimpose them each other. Okay, so these are known as non-superimposable mirror images, and that is what the optical isomerism. Right. Now let's move on to the different problems depending upon isomerism. So first problem is what? This problem. Can you tell me what is the answer? Yeah, very simple problem. Yes. Among the given molecules which can exhibit the tautomerism. So, कौन tautomerism दिखाएगा यहाँ पे? Yes, which is going to show the tautomerism here. Which of the following complexes molecules can exhibit the tautomerism? So, tautomerism के लिए मैंने आपको कहा there should be one alpha hydrogen present, then and then only the tautomerism can take place. So here carbonyl group है, इसके साइड में ये दोनों substituent है, ये भी दोनों substituent, no alpha hydrogen, so it is not going to show the what? It is not going to show the tautomerism, right? Third molecule देखो, third molecule में क्या है? यहाँ पे है हाइड्रोजन, कि यहाँ पे है क्या कुछ 1 2 3, ओके, यहाँ पे 1 2 3 है, देन यहाँ पे कुछ है क्या हमारे पास हाइड्रोजन है. Yes, can you tell me whether it is hydrogen present or not? So यहाँ पे देखो ये ब्रिज पोजीशन है, ठीक है, ये भी ब्रिज पोजीशन है, तो ये they cannot exhibit the tautomerism. Why? Because Braid's rule, ब्रिज पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन होने के कारण भी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता, इसलिए ये दोनों जो पोजीशन है वो नहीं चलेंगे. कि यहाँ पे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ब्रिज पोजीशन पे, ठीक है, ब्रिज पोजीशन पे, और यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल नहीं दिखाएंगे. ये दिखाएगा मॉलिक्यूल, लेकिन इट विल फॉर्म द इनॉल लाइक दिस वे ओनली. इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द इनॉल लाइक दिस वे. ये जो हमारा ब्रिज पोजीशन है ना, ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आके OH नहीं फॉर्म हो सकता. ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो द ब्रिज रूल. ओके, एट द ब्रिज पोजीशन डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. Okay, that's why our answer here is what? A. Our answer here is what? Option A. 3 compound, third compound only. Yes. Next compound, given are the 3 molecules which of the following can exhibit tautomerism. So now tell me. Yeah, यहाँ पे कौन दिखाएगा? Which of the following can exhibit the tautomerism? 1 2 3. Second and 3. 1 2 3. 1 2 1 3. Yeah. What will be the answer here? 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, कौन कौन दिखाएगा? तीनों दिखाएंगे या एक ही दिखाएगा? कैसे देखना है? देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नियर टू द कार्बोनिल. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यस, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है. सो नाउ ऑल द 3 आर गोइंग टू शो अस व्हाट? कीटोइनॉल tautomerism. See here, it is having alpha hydrogen atom, that's why it can show कीटोइनल फॉर्म. यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू शो द कीटोइनल फॉर्म. यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? यहाँ पे ये साइड में प्रेजेंट नहीं है, थर्ड मॉलिक्यूल में इधर के साइड में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट है एंड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, ठीक है. सो यहाँ पे गैमा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है tautomerism में, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे गैमा हाइड्रोजन है. तो दीज आर टेकिंग participation in the given tautomerism. So that's why here all the 3 molecules show tautomerism. कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथिल acetoacetate as shown is below. Okay, this is the ethyl acetoacetate molecule. Its enol form is shown here. Okay, enolic form is shown here. So we need to calculate here how many sigma and pi bonds are present. So we have given this structures of tautomers. Okay, tautomers, they are isomers of each other, and we need to find out how many sigma and pi bonds are present here in the enolic form. So which is the enolic form of ethyl acetoacetate here? Yes, enolic form कौन सा है यहाँ पे? See, this is the enolic form, right? ये क्या है? हमारा कीटो फॉर्म है. दिस इज द इनॉलिक फॉर्म. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और पाई बॉन्ड्स है? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट किए थे. क्या आप बता सकते हो? यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? C2H5. Yes, here 1 sigma bond, here 1 sigma, 1 pi, here 1 pi. That's why there are 2 pi bonds, right?
2 पाई बॉन्ड्स मतलब ये दो ऑप्शन हमको चेक करने, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है, दीज आर नॉट एप्लीकेबल, 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, राइट। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट नाउ वी नीड टू चेक। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे, C2H5, C, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। So how many are coming? 1 2 3 4 5 6, so 6 सिग्मा बॉन्ड्स है आपको, ठीक है। कितने हो गए देखो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई, बराबर है, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है, और ये बॉन्ड हो गया 16, ठीक है। और कितने हैं, कितने हैं दिख रहे हैं आप लोगों को, यस, हमको 18 चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9 तो सिग्मा बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे 18 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, देयर आर 18 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट। कैन यू टेल मी हाउ? CH3 H H H, राइट, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, देन C, देन यहाँ पे O H, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, राइट, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, C, यहाँ पे एक सिग्मा, राइट, कैन यू कैलकुलेट दिस, C, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक पाई O, यहाँ पे O, देन यहाँ पे एक C H H C H H H, right? Can you calculate these? Yes, you can respond me. So you can give me the response. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, right? And where is 18? This is 18. Yeah, very good. So we have 18 now and 2 pi bonds. Okay, so our answer is what? Option C. Any doubts in this? Okay, let's move on to the next problem. Okay, next topic, that is fission. So when any bond breaks in the organic chemistry, there are two types of cleavage takes place. One is a homolytic and another one is a heterolytic. So what is the homolytic? The bond when break, every atom will get the equal amount of electrons from that given bond. So every bond forms with the 2 electrons. So one electron will go with the one atom and another electron is going to go with the another atom, and such spaces are known as free radical spaces. But if heterolytic type of cleavage takes place, that means what? Only one atom will take place, both the electron, and one atom will be having no electron with him. Okay, so that's why there are formation of ionic spaces. So if one positive and another will be what? Negative. So what are these? So certain are what? Electrophiles, that is electron deficient species. That is what? These are what? Electron deficient species. So these are electron deficient species which are known as electrophiles are formed, and these are what? Nucleophiles. Okay, these are what? Nucleophiles. So what is electrophile species? And when these electron deficient species attack, so they attack at the nucleophilic center where electron rich compounds are present. Okay, all non-metal cations or metal cations which have vacant d orbitals are known as electrophiles. So these are what? Our electrophiles. As well as you know that Lewis acids like BF3, LCl3, FeCl3, these are what? Electrophiles. Non-acidic, non-metal acidic oxides like CO2, SO2 are also electrophiles. So there is a formation of electrophiles and nucleophiles, that is positive and negative ion, cation and anion, we name them. What is nucleophiles? Nucleophiles are what? Electron rich spaces. These are what? Electron rich spaces. So these rich spaces attacks only at electrophilic center because they are already electron rich. So they want to give their electron to certain compounds, and they give they give their electrons to electrophiles. So all anions like Cl minus, okay, NH2 minus, OH minus, these are what? Nucleophiles. Lewis bases are like this way. Okay, they are able to give the electrons to different compounds. Next, benzene and alkenes are also nucleophiles. Nucleophilicity order is in which way? So this is what our nucleophilicity order. Hydride minus, then methyl minus, then OH minus. So generally these nucleophiles are what? Very strong bases. Right? Very good. Next, when we talk about this reaction intermediates, as we have talked right now, that there is a formation of free radical. So free radical कैसे होते हैं? Free radicals कैसे होते हैं? They are highly reactive, neutral and electron deficient species. Right now just we have talked. और उनकी stability कैसी होती है?
primary सबसे छोटा, then secondary, then tertiary, then this is allyl cation, then benzyl cation, then benzyl substituted, दो benzene substituted cation and tribenzyl substituted cation, नहीं सॉरी, फ्री रेडिकल. ठीक है, इस तरह से उसकी क्या है रिएक्टिविटी है. सो कौन से प्रकार का रेडिकल ज्यादा यहाँ पे स्टेबल होने वाला है, कौन से प्रकार का रेडिकल यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होने वाला है. सो ऐसा जिसको 3 क्या लगे हुए हैं हमारे बेंजिल रिंग, ठीक है, बेंजिल रिंग जिसको अटैच्ड है, दैट रेडिकल इज व्हाट अवर स्ट्रॉन्गेस्ट और इट इज व्हाट हैविंग अ हाईएस्ट स्टेबिलिटी, राइट. सो नेक्स्ट इज कार्बन कंटेनिंग, next is what carbon containing chemical species which are having 6 electron, which is known as carbocation. So you know for carbocation also the order is same, allyl, then secondary, primary, this is CCH5, that is a benzyl cation, then vinyl cation. Okay, so less stable carbocation are primary, secondary, can be converted into more stable carbocation through either the 1,2 hydride shift or 1 methyl shift. So ये जो primary और secondary हमारे जो carbocations है, इनको हम लोग stable carbocation में convert कर सकते हैं by doing certain shifts, hydrogen shift or methyl group shift. Next, carbon containing chemical species which bears 8 electrons, ठीक है, जिनके पास 8 electrons है, ठीक है, ऐसे जो species है उनको हम कहेंगे कार्बेनियन. तो कार्बेनियन की ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी की, लाइक दिस वे. कार्बेनियन में देखो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ठीक है, यहाँ पे कार्बेनियन माइनस साइन, अलाइल, देन दिस CH2 माइनस, देन CH माइनस, देन C माइनस, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर है. The neutral divalent carbon species in which 2 non-bonding electrons are present along with the 2 bondings are known as carbene. तो कार्बिन में क्या होते हैं, 2 bonding होते हैं और 2 non-bonding electrons present होते हैं. That's why this is known as carbene species and it acts as a electrophile. Okay, because it being a electron deficient species. Now let's talk about the electronic effects which are very, very important in order to understand the acidity, basicity of different organic compounds, as well as in order to understand why certain compounds react like this way. Okay, so the first effect which is very, very important is inductive effect. Inductive effect tells us about what it tells us about if there are 2 electrons shared between any ionic bond, so the atom is going to shift these electron pair towards itself, bearing the negative charge on itself and giving the positive charge to the neighboring atom, partial positive and negative charge. And such a type of effect of withdrawing the electron towards itself is known as inductive effect. Okay, inductive effect. And this withdrawing effect is known as minus I. And if there is certain substances which are giving the electrons to a given bond, it is known as positive I effect. So electron withdrawing and electron donating, there are 2 types of inductive effects. And this effect is permanent and propagates through the carbon chain. So if chlorine atom is present here, okay, from this also it is going to bear the positive charge, going to pull the electrons. Okay, यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है. So Cl other and alkyl group shows plus I effect here. Greater the number of carbon atoms in alkyl group present. Okay, यहाँ पे you can see secondary alkyl halide is present and tertiary alkyl halide is present. Here you can see secondary alkyl halide is present and tertiary alkyl halide is present. So plus I effect of alkyl group enhances negative I effect of halogen atom. Tertiary alkyl halide will be most reactive due to presence of more plus I groups. Okay, that's why it will be showing most plus I effect and this is going to show less plus I effect. ठीक है, और इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी इसका क्या होगा, ज्यादा एनहांस होगा, क्योंकि उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, अल्किल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, हमारे ये सब नाइट्रोसाइनो, एसिडिक, हिस्टेरिक, ओके, ये सब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यू नो दैट इट इज temporary effect. Okay, it is defined by the polarity produced in a multiple bond. So here what I have done is I have break this bond and I have formed the charges here. So this is what, which type of effect. So here plus E, that is plus electromeric effect is formed. यहाँ पे reagent मैंने डाला और यहाँ पे ये अगर ये bond मैंने break किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे nucleophile can bind, so that's why this is minus effect. यहाँ पे electrophile can bind, that's why it is what, plus effect. This is mesomeric effect. Next is resonance effect. Resonance effect, you all know it is a delocalization of pi electrons. So here I have shown the delocalization in aniline. So there are 2 types of resonance, plus R as well as minus R. So what is the plus R? Plus R is shown by the electron donating groups.
Okay, like halogen, OH, OR, OCOR, NH2, NHCOR. So these show plus R effect, like I have shown here. Okay, if electron donating group produces plus R effect, are ortho and para directing, then they activate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction. आपको पता है बेंजीन रिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. तो अगर ये प्लस आर वाले ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे होंगे तो वो क्या करते हैं, इस रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सेप्ट व्हाट हैलोजन. हैलोजन्स do not activate the ring, but they deactivate the ring. ठीक है, halogens slightly deactivate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction. More electron donating group, more will be the basic nature for a given molecule. Okay, electron withdrawing group कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे electron withdrawing group and they show minus R effect. Very very important. So electron displacement मैंने बेजल डेट का यहाँ पे दिया हुआ है. Electron withdrawing group अगर मेटा पोजिशन पे होंगे then they will contribute more, or they are going to what, they deactivate the given benzene ring, okay, towards electrophilic substitution reaction. More the electron withdrawing group, more will be the acidic. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिक नेचर ज्यादा होगा. ठीक है, याद रखना है. और मेटा पोजिशन पे चाहिए ये, और ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे चाहिए. नेक्स्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? दैट इज आल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. So mesomeric effect is what? It is defined on the dependent upon the polarity of a given compound. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. इस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए हैं. दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट. ये क्यों मॉलिक्यूल में तैयार हुआ है? ड्यू टू द पोलैरिटी इंट्रोड्यूस्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने प्लस m दिखाया हुआ है. व्हाई? बिकॉज NH2 इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन, what it is, what electron donating group. Okay, यहाँ पे decreasing plus m power is like this way and decreasing minus m power is like this way. So there are also plus m and minus m here. Okay, plus m group as well as minus m group. Okay, the group of atom is said to show plus m effect when the direction of electron displacement is away from it. जब away from it होगा तब plus m होगा, जब towards it होगा वो क्या होगा हमारा minus m. तो प्लस एम वाले कौन से है? O माइनस, NH2, OH, OR, NHAC, अल्किल ग्रुप. दीज आर व्हाट? प्लस एम. उनके तरफ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यस, अवे फ्रॉम देम एंड टुवर्ड्स देम. वेरी गुड. सो दीज आर द ग्रुप, ट्राई टू रिमेंबर देम. नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन. सो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हियर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन किसका होता है? पाई बॉन्ड का. यहाँ पे किसका हो रहा है डीलोकलाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. Okay, so what is the condition which is required for delocalization of the sigma electrons through a given CH bond in a given alkyl group attached to directly the carbon atom? So compound should have at least one sp2 hybrid carbon atom in it. Okay, either alkene होना चाहिए, alkyl कार्बोकैटायन होना चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए. इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2. Alpha carbon with respect to sp2 hybrid carbon should have at least one hydrogen. More the number of CH bonds attached to the unsaturated system, more stable will be the alkene. So अगर हमको stability alkene की explain करनी है, then we can explain that with the basis of hyperconjugation. See here, this is a double bond present. Okay, so this towards this double bond, there are how many alpha hydrogen present? These are the alpha hydrogen, these are the alpha hydrogen, these are the alpha hydrogen, these are the alpha hydrogen. So total 12 alpha hydrogens are present, and that's why this becomes the most stable compound with respect to other compounds present here. For second molecule, you can observe here what is happening. Here for second molecule, what is happening? There are only 9 number of alpha hydrogen atoms, right? Here you can see there are only 9 number of hydrogen atoms. Yeah, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3. ठीक है, तो 9 है. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स है. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड होगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन. सिमिलरली फॉर कार्बोकैटायन आल्सो, because more number of structure you are going to form, more number of delocalization are going to happen, and that's why that will be the more stable thing. Next, let's start to solve the certain problems depending upon these concepts of effects.
Okay, the tertiary butyl carbocation is more stable than the secondary butyl carbocation because of which of the following? So right now we have talked about this. Q होता है minus R effect of CH3 plus R effect of CH3 minus R effect of CH3 और hyperconjugation. कार्बोकटाइन का टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकटाइन के. किस वजह से स्टेबल है? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. सो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज इन टर्शरी यू कैन सी 9 CH bonds are present while for secondary carbocation there are only 6 alpha hydrogens are present which makes it what? Less stable. Very good. Any doubts in this? Just हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे कार्बोकटाइन के लिए ये क्या है? सेकेंडरी है और ये है टर्शरी. टर्शरी ज्यादा स्टेबल है. Which among the most stable carbocation among the following is? तो यहाँ पे कौन सा स्टेबल कार्बोकटाइन है? देखिए C, यानी ये जो यहाँ पे कार्बोकटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, CH3 CH यहाँ पे कार्बोकटाइन है हमारा, then CH2 and CH3. This is more stable carbocation. Why? Because it consists of hydrogen atoms, more number of alpha hydrogen, 3 and 2. There are total 5 alpha hydrogen present. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन और 3, 4 ही प्रेजेंट है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 and 2 4. यहाँ पे कितने हैं? हम लोगों ने देखे 5. यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 2 और 2 4. ठीक है, इस ये साइड में नहीं होगी, सॉरी, सिर्फ 2 प्रेजेंट है इस पे. यहाँ पे साइड में कुछ नहीं है ना. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द सी मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू शो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन. ओके, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड. एनी डाउट इन दिस? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. Which of the following is correct with respect to minus I effect of the substituent? तो कौन सा करेक्ट है? देखो मुझे बताइए, माइनस आई इफेक्ट या 1 2 3 4. तो यहाँ पे ए और बी दो ऑप्शन है. माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एटम. सो यहाँ पे देखिए बी में क्या है? NR2 OR और F. ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा? हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, माइनस आई. एज वेल एज ए में भी देखिए वही केस है, H2 को रिप्लेस करके R लिखा है यहाँ पे सिर्फ. दैट्स व्हाई A एंड B बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होगा? देखिए आप लोग मुझे बताइए, ABCD. यस, यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि NO2 क्या प्रेजेंट है? NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग हियर, thus it will stabilize the electrophile at meta position present. ओके, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जो फॉर्म हुआ है उसको वो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज. इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है? नहीं होता है. इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पेसिस एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड नेगेटिवली चार्ज तो नहीं होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है. इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? अवर इलेक्ट्रोफाइल. Very nice. Which of the following statement is not correct for nucleophile? कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाइल के लिए नॉट करेक्ट है? अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड. न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग. न्यूक्लियोफाइल इज लेविस एसिड. हमको नॉट करेक्ट चाहिए. न्यूक्लियोफाइल लेविस एसिड है क्या? बच्चों बताइए कौन सा है नॉट करेक्ट? डी. न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट? लेविस बेसेस. दे आर नॉट लेविस एसिड. वेरी गुड. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन. ये साइक्लोपेंटेनॉन है विथ मिथिल लिथियम गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज. तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए क्या होता है. मिथिल लिथियम के साथ जब हमारा कीटोन की रिएक्शन होती है तब यहाँ पे मिथिल है हमारा निगेटिवली चार्ज और लिथियम है हमारा पॉजिटिवली चार्ज. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करता है और इस तरह से वहां पे हमको क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. ठीक है, ठीक है. साइक्लोपेंटेनॉइल अनायन मिल रहा है यहाँ पे हमको. ठीक है, और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है. सो ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट आंसर. Right? Yeah. Next, which of the following is the most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to take place? तो यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होनी चाहिए. तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने के लिए हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या चाहिए? Yes. What do we need here in order to have the nucleophilic attack? So in order to have a nucleophilic attack, we must have a stable carbocation species because you know SN1 reaction. राइट, SN1 रिएक्शन अगर करनी है हम लोगों को तो हमको क्या चाहिए? कार्बोकटाइन बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल में कार्बोकटाइन सबसे अच्छा फॉर्म हो रहा है? देखिए ABCD. यस,
So nucleophile are going to attack a stable carbocation in the molecule A. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ठीक है। सो स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस, ये CH3 क्या कर रहा है, इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इसलिए ये आपका स्टेबल कंपाउंड होगा और ये अच्छे से हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने देगा। ये पहला मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉरी नॉट बी, एक ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक आ रहा है ना, इधर जा ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो हमको दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन, तो यहाँ पे हमको बताना है कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर होने वाला है, ठीक है। तो किसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। किसमें किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बताइए, यस अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसमें कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके बाद ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये क्या है, रिंग्स है ना, इन पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अगर हमारा कार्बोनिल, मतलब ये अगर हमारा रेडिकल है, इसके साइड में अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिज पोजिशन पे आ जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा अल्फा, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन हमको चलेगा, दैट्स व्हाई कंपाउंड 3 will show the hyperconjugation only. Okay, yes. Next, in which of the following compounds the CCl bond ionization shall give more stable carbonium ion? Okay, तो कौन सा देगा हमको more stable carbonium ion, यहाँ पे बोलिए, yes, in which of the following compound the CCl bond ionization will give the more stable carbonium ion? तो यहाँ पे more stable carbonium ion कौन देगा हम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, yes, most stable will be what, D option, due to the presence of hyperconjugation, क्योंकि इसके hyperconjugation मतलब क्या, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितने ज्यादा है, 9 है, ठीक है, 3 3 3 9। Next, the radical is aromatic because, so this radical is aromatic, why is it aromatic, can you tell me? Yes, this radical CH2 is aromatic because it has 7p orbitals and 7 unpaired electrons, 6p orbitals and 7 paired electron, 6p orbitals and 6 unpaired electrons, 7p orbitals and 6 unpaired electrons. So this is aromatic. Aromatic होना चाहिए मतलब 4 के मल्टीपल में वहां पे होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में कितने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, बताइए कितने होते हैं यहाँ पे, 2n 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 into 1 plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है या 7 है, यस बोलिए बोलिए, 6p ऑर्बिटल्स है ना, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 6p ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, ओके, दे हैव 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन C will be correct. Any doubt in this? Are you getting this? Yes. Very good. Next, arrange the following in increasing order of stability. तो यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास कार्बोकेटाइन दिए गए हैं, ये कार्बोकेटाइन है, इसके यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये क्या है हमारा, इस तरह से आइसो ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड में, कि इन पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बन है, उस पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है हमारा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, यहाँ पे ये 3 को सराउंड कर रहा है, ये 2 को सराउंड कर रहा है, ये 1 को सराउंड कर रहा है, तो इसके पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 6 7 8, सो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सो विच विल हैव द मोर स्टेबिलिटी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसके पास ज्यादा होगी बच्चों, बताइए, yes, here option A will be correct, right? Second compound, then first one, right? Second compound, then first one. Second में कितने 9 है, first में 8 है, then third में कितने हैं 6 है, then fourth में कितने हैं 3 है, और fifth भी present है, देखो नीचे fifth में कितने अल्फा हाइड्रोजन present है 0. That's why the stability order of carbocations will be like this way, 5 4 3 1 2. That is option A. Right, very good. Now tell me the last problem of today's lecture. What is the hybridization state of benzyl carbonium ion? Yeah, can you tell me what is the
hybridization state of benzyl carbonium ion here. This is carbonium ion. Yeah, can you tell me what is the hybridization of this? कितना होगा? sp2 होगा, sp होगा, sp2d होगा, sp3 होगा. What will be the hybridization of this given compound? Yes, कार्बोनियम आयन है. कार्बोनियम आयन का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? मैंने आप लोगों को बताया. It is always what? sp2 hybridized, right? It is always what? sp2 hybridized. So here option A will be the correct answer, right? Option A will be the correct answer. So do you have any doubt in this overall session? If you have any doubt, you can tell me. Yes. Yes. So thank you so much for joining in. If you have any doubts, you can tell me. You can ask me. Okay, no doubts. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you for joining in. Let's meet tomorrow for the next session. Okay.